मतलब कुछ फिल्म्स हैं जिनकी वजह से मैं फिल्म मेकर बना हूँ, लेकिन वो फिल्म मेकर अभी अच्छी फिल्में नहीं बना रहे हैं, तो मैं पागल हूँ रंगीला के लिए। Today, if for Bhediya you didn't have a Varun Dhawan, would you still get the kind of budget and the amount to mount it and create it the way you want to? It's called film, Drishyam. Last 7 years, people are only talking 2nd October को Drishyam, then me in Pav Bhaji. Some messages. Yeah. So like यार ये pressure एक अलग level का pressure है picture पे. It's very sweet. I've noticed this in all your interviews. You always take your writer's name. Yeah. It's such a nice thing that you do. मैं एक्चुअली वो सीन जब देखा मुझे याद आया, मैंने एक सीन इस तरह का किया था, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। आज जब मैंने कॉपी नहीं किया। नहीं जब मैंने बहुत बड़े बड़े एक्टर्स और स्टार्स को देखा है कि यार बहुत बोर करे पिक्चर में, क्यों? बिकॉज वो कंटेंट नहीं है। या और अगर कंटेंट बड़ा नहीं होता तो मैंने बड़े बड़े एक्टर्स जो है, बहुत बड़े बड़े स्टार, वो सबसे पहले पूछता है अच्छा स्टोरी क्या बताओ। मतलब आपने सबसे अच्छा काम किया, लेजेंड को हमारे साथ बिठा। हाँ वेरी गुड, वेरी नाइस। सबसे बड़ा मैं मुझे मतलब आपको सुनने में जो मजा आया ना। Take one, shot one, take one, 2. Hi everyone, this is Avinash Lohana and this is my colleague Himesh. At the beginning of the year, with this whole COVID impact, the industry looked like Bhool Bhulaiyaa. However, the Drishyam is much clearer now. With their colors, the darlings in Bhediya have thoroughly entertained the audience, and with all the love pouring in, all I want to say is cinema, Jug Jugg Jeeyo. Please welcome these amazing directors to the roundtable today. Guys, thank you. But I would also want to thank each and every director for bringing the joy back to our life with cinema. The year started on a grim note but has ended with a bang thanks to each one of you. Thank you. Thank you. No, really, it's really been an amazing year at the box office this year, which is why, and OTT of course, I want to start this interview by this one question. If there was an award for the most favorite scene of the year, which scene from your film would you like to send as a nomination? Thinking. It should start from you. नहीं, मैं तो मतलब मैं बोलूंगा कि मेरी पूरी फिल्म सब यही बोलेंगे। इन भूल भुलैया द क्लाइमैक्स पोर्शन जहाँ पर मोंजली का उसमें आ जाती है और फिर वो जो ड्रामा कर रहा है एंड फर्स्ट टाइम रिवील होता है कि तबू जो है वो जो चाकू वाकू लगाती, वो शूट करने में मुझे बहुत मज़ा आया था एंड आई फिल के बहुत ही डिफिकल्ट सीन था वो, जो टोटल परफॉर्मेंस का था, कब वो शिफ्ट होता है कब ये होता है एंड लास्ट मोमेंट तक जब तक वो गले में चाकू नहीं रखती ये पता नहीं लगता है कि ये लड़की कौन है। तो मेरे हिसाब से पूरी फिल्म का वन ऑफ द बेस्ट सीन वाज बिल्कुल द क्लाइमैक्स। Jasmeet? The climax. I want to say the Kankar scene in the beginning because it set the tone of the film, but I'm going to go with the Karim scene where he's tied to the chair and the mother-daughter are deciding how to kill him because it's what got them there. It was beautiful. And what made them become these people where they are thinking कि चाबी वाला खिलौना बना देते हैं इसको and why are these devious thoughts going through their mind and they'll never even do it. I mean Badru is not the person who will do it. So yeah, that scene. Lovely. It's madness. बहुत अच्छा सीन था वो। Yeah. मैं एक्चुअली वो सीन जब देखा मुझे याद आया, मैंने एक सीन इस तरह का किया था, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, सिंग इज किंग में जहाँ वो जो डॉन है वो चेयर पे बैठा हुआ है एंड ही बिकेम अ वेजिटेबल टाइप का और उसको जो है प्रॉपर्टी बना के Oh wow, yes. तो मैं जब आपकी पिक्चर Maybe देख रहा था subconscious. आज जब So पिक्चर मैंने देख रहा copy था नहीं किया। नहीं जब पिक्चर देख रहा तो मुझे लगा अरे यार ये कितना अच्छा सीन किया है, तो आई वाज Yeah. Thank you. Yeah. Lovely. For me, it was, I think, that scene where Kuku and Varun and Kiara have that altercation with each other, because that's the kind of scene where it could go overboard really easily. And I know we had done a lot of rehearsals and stuff, but I feel like jitna bhi rehearsal reading kar lo, wo scene वैसा है that comes to life only on a set. And I think they did fantastically well. So that is my personal favorite scene from the film. It's amazing, yeah. Abhishek? I think the last half an hour, I think the revelation of Vijay's planning, the master plan, I think was so well written, and I think वहाँ पे हमारा भी when we were writing we knew exactly ये point है जहाँ पे लोग react करेंगे यहाँ पे. I think that's something which I really love, and I think audience are giving the most love to that last half an hour of the film, I think. Yeah. Can I tell you my favorite scene from the film? There's this one sequence where Akshay goes to the house to meet Shreya. Oh and, yeah, so creepy. yes. That is really creepy, especially with DSP's background score. It kills it. I think when we thought of Akshay to cast, I think that's the first thing we wrote. Okay, let me write a scene
where I'm gonna narrate to him and he's gonna come on the film straight away. So I think that's the first thing we wrote for him as a character. And I think it really worked. But tell me, was that part where he sees that lily plant, was that part of the script Yeah, or did yeah, you? yeah. ज़्यादा ही बोलना मैंने देखी नहीं है। Yeah, अच्छा, yeah. okay. No. That's पिक्चर भी No रिलीज हो रही spoilers. थी मैंने किसी No की spoilers. Don't But बोलना that पाएगा। was- that was already we wanted to really- really juice out the entire scene. That's why we wrote Yeah, a that was really cool. 15 minute का scene लिखा मैंने वो. Stress का really good. Even that, you know, that moment where he shuts the door very quietly. Yeah, so Yeah, just yeah, keep yeah. staring at Yeah, her and yeah. she's there standing. Yeah, that's the entire scene was like long scene and a lot of debate about कितना से छोटा करना है. Like, don't do it. This scene will really stand out too much. People love it. It's a very fresh approach to a scene like this. I think that really वो worked. अच्छा होना ही है ना, क्योंकि आपने कि यार वो fear है, अक्षय आना undercurrent चाहिए तो है वैसा जो लिखा वो Yeah, quantity Yeah, yeah. Make him an offer he can't refuse. Yeah, And he's yeah. done it so well also. Yeah, he's fab. He's fab. It's He's fab. He's too good. So yeah. Amazing. I mean, like he said, sir said कि सब कुछ तुमने बनाया तो अच्छा ही लगता है. But I'll mention two things. One that I had the most fun because when I cracked it and I just was so delighted with myself was जब वो जगन मिलता है कला को. I don't even know whether this is a spoiler free this thing. तो जगन की body उसको मिलती है and Yeah. you know she falls like into a bottomless pit. That moment and what I really love is the blizzard in the recording studio. Yeah. At the end when she breaks down. So when it starts snowing inside the recording studio. Was it tough to can that sequence? No, it was great fun. Oh, lovely. और उसमें VFX भी नहीं है. सब इन कैमरा किया. I had so much fun doing it. So Wow. I think maybe I find it very hard to pick. I love all of it. Yeah, yeah. That's true. Of course, the films in totality are also all Yeah. amazing. For Bhediya, एक्चुअली डिपेंड करता है कौन सा अवार्ड में भेजना है. यू नो Oscar. अगर ऑस्कर के लिए भेजना है तो लास्ट सीन जहाँ पे व्हेन ही गेट्स अ पावर एंड he turns into a wolf and then both both of them go to the cliff. fight each other and आखिरी walk toward the cliff. You haven't seen it, so you. Yeah. I know. हाँ, so that sequence I want to send. But अगर ऑस्कर नहीं, तो I think हिमेश वाला scene is one of the. Oh my God! Yeah. That's So that scene we can send. Yeah, that's. Yeah? I think that's a scene which got the maximum claps and laughters in the Yeah. theater. Yeah. I didn't expect that. हाँ. गाना बजा मतलब क्या हो रहा है यार? कमाल लगी. हिमेश से कॉल आया आपको? अभी तक तो नहीं आया. सब पूछ रहे हैं. But you know, as a director, it is always a task to balance between art and commerce. You know, when we make films for OTT, I believe that commercial pressure goes away of, you know, having those songs or the commercial trappings. And when we are making for the big screen, it's always a task कि वो balance tune करना है. How difficult is that process for you as directors? अगर मुझसे पूछोगे आप, तो मैंने फ्रॉम द फर्स्ट फिल्म मैंने कमर्शियल बनाई है या आर्ट बनाई, मुझे पता नहीं, जो मेरे अंदर से है वो बनाई है. चाहे वो फर्स्ट स्त्री हो, बाला हो, इवन भेड़िया हो, कभी भी ये सोचा नहीं, एक्चुअली मैंने नहीं सोचा कि मैं कमर्शियल बना रहा हूँ. मुझे लगा ऐसे ही बनाई जाती है. अभी शायद सोचूंगा, आगे सोचूंगा कब क्या होगा, अभी तक तो नहीं सोचा है. इवन मेरे जो प्रोड्यूसर है वो भी, उसने भी मुझे सोचने नहीं बोला है कि गाना डालना है, कि हाँ गाने के लिए बोला है, एक्चुअली गाने के लिए उसने बोला एक दो बार कि ये गाना डाल दे. उसके अलावा कभी कोई फिल्म के लिए, इवन इस फिल्म में जो कॉमेडी करना, एक कॉमेडी फिल्म बनाना, हाँ अच्छे एक्टर्स ले लो, कॉमेडी करो, डायलॉग्स अच्छे लिखो, एक होता है. उसमें साथ में होता है कि चल थोड़ा कुछ और भी डालते हैं ना. तो कोशिश वही की थी मैंने फ्रॉम द फर्स्ट फिल्म, सेकंड में, इसमें भी. इवन द लास्ट सीक्वेंस, इट्स वेरी नॉन कमर्शियल. योर एक्टर्स आर नॉट देयर. सडनली हीरो हीरोइन नहीं है, विलन नहीं है, दो भेड़िया हैं आपस में लड़ रहे हैं, एंड सडनली उन दोनों का पूरी पिक्चर बन जाती है. तो इट्स अ डिसीजन जो मैंने लेने की कोशिश की एज अ आर्ट समझ के, कि हाँ देयर इज अ पोएटिक थिंग आल्सो इन द फिल्म. कॉमेडी करते करते आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ करने की कोशिश की. इवन सो मुझे लगता है कि, और वो मुझे लगता है ऑडियंस को पसंद भी आ रहा है. कि बहुत दिन हो गए बोलते हैं ना कि बॉलीवुड वही हीरो हीरोइन विलन ये वाला, तो वो तोड़ना चाहिए एज अ फिल्म मेकर. हम लोग को कोशिश करनी चाहिए. और उसमें कमर्शियल क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो बाद में पता चलता है. बट ऑब्वियसली एक जो आप बोल रहे हो कि एक कमर्शियल एंगल थिएट्रिकल बनाते वक्त आपको होता है कि आप फिल्म बना रहे हो, सडनली आपको होता है कि हाँ पैसा भी कमानी चाहिए, वो भी करनी चाहिए. बट अभी तक ऐसा आया नहीं है कि मुझे उतना कम जितना चाहिए, लॉस में नहीं जाने दूंगा प्रोड्यूसर को, उतना मैं भी बोलता हूँ. कितना प्रॉफिट होगा बाद में देखेंगे, लॉस में नहीं जाने दूंगा, बस यही एक है.
And Anvita, for you, you had a complete different experience, I believe, with Qala. Yes, according to me, I don't think storytellers think about commerce and not Art. commerce, art or anything. हम लोग सिर्फ कहानी बताने की कोशिश कर रहे थे और हमको मौका मिल जाए तो we'll try to do our best. You know, we just want to walk away, like he said, कि जिसने भी हाँ कहा है पिक्चर को, they should feel happy by the end of the entire experience, whether it's your producer or your actors or your HODs. सबको when they walk away from that experience should feel कि हाँ ये सही किया, इसको हाँ बोला, इसके साथ फिर से काम करेंगे. I think directors उससे ज़्यादा सोचते नहीं हैं. Want to honor the responsibility that's been given to you. No one is going to take it lightly because no one is taking their stories lightly. You know? So I think that's how it is. I used to now hearing him it made me feel really happy because I used to think हाँ क्योंकि मैंने OTT के लिए की तो I never had to think about it. But also I think it has to do with that my producer never made me think about it. उसने कहा जैसे बनानी है वैसे बना. You know? And now listening to him, it's so lovely that he's made theatrical films and he's had the same experience. So, अगर मैं ये सोचता ना सच में स्त्री नहीं बना सकता. Even भेड़िया तो छोड़ ही दीजिए. अगर वैसा होता तो. कौन सोचेगा मतलब? That's where the producer comes in handy. Yeah. That's the if you don't have that pressure. Then producers have become more active now. Because his money is at stake. So if he wants you to go a certain direction, and if he's not forcing you to, then that's great. Then you have the freedom to make it the way you want. Exactly. Yeah. But Abhishek, you have been a producer for so long, and then you made a Drishyam. You know, it didn't tick mark all the boxes of that commercial film. It was a thriller. And you know, especially in the pandemic times, सब बोल रहे थे thriller नहीं चल रहा है, इस बड़े screen की बड़ी film. And there comes a Drishyam which has defied all the theories. And you know, even it doesn't have any commercial trappings of those chartbuster music or something like that. What do you have to say about this aspect? So I think it all depends on genre. Like when I was writing Drishyam, I never had a plan to have any song in the film. Even there's only one song which comes in the film. That only came because once I started watching edit, I just felt sort of family missing लग रही थी मुझे. The narrative, the film is all about the family eventually. तो थोड़ा missing लगा तो I said now I might have to use a song because somewhere I felt they're missing in the film, the first half, because second half takes off a different level altogether. So the only reason I had to put that one song, I said I need one because I couldn't incorporate a scene altogether because it's completely different rewriting process altogether. So I think there was a position where I could really think of placing a song. So that song came. There was a title track in which I wanted to come with. Not in the film, but title track and the end credit. But then the song had to be there because narrative was a little better in that way. But I think I agree with them. Certain producers sometimes push you to put a song, but I think the smarter producers don't really push you to have a song in the film. It's all about the narrative and the genre you're making. Like we had a Section 375, we never had a song in that. It's clean cut thriller film which we made, and even Drishyam never planned to. But एक गाने जरूरत पड़ी तो डालना पड़ा मुझे क्योंकि narrative मेरा थोड़ा family miss out हो रही थी. So I said just आने से maybe people might not miss the daughters and the wife also. मुझे लगता है कमर्शियल का जो टर्म है ना, कमर्शियल फिल्म क्या होती है, जो पैसा बनाती है उसको आप कमर्शियल फिल्म बोल रहे हो. इसका अप्रोच जो होता है ना, मुझे लगता है कमर्शियल फिल्म इज समथिंग जॉनर वाइज आप उसको डिफाइन अगर करोगे. थ्रिलर देख रहे हो तो थ्रिलर में इनग्रॉस होने चाहिए. उसमें आपको गाने डाल के वो नहीं बनती. मतलब जो भी आप फिल्म देखने गए हो, जो भी जॉनर की है, ह्यूमर है तो ह्यूमर, कॉमेडी है तो कॉमेडी, जो भी अपना उसमें आप इनग्रॉस होगे नहीं थ्रू. आई थिंक दैट इज कॉल्ड कमर्शियल फॉर मी. पैसा उसके बाद अगर उसमें आपने हॉरर है, प्रॉपर हॉरर है, अगर आपने उसमें बनाया और पूरा लोगों को पसंद आया तो आपके पास अपने आप कमर्शियल्स आ जाएंगे. मुझे ऐसा लगता है. Yeah, I mean, there are different times. Even horror, we used to have a song before. We have seen brilliant horror like that. That commercial horror song. At the time, maybe the narrative is not required because the audience has changed. They evolved too much. They don't like. Maybe sometimes they might like his film. I think it's required. My film maybe not kind of thing. Like very different genre, different film. मतलब सॉन्ग से मुझे नहीं लगता कमर्शियल होती है फिल्म. कमर्शियल फिल्म होती है इनग्रॉस कितना करते हो आप ऑडियंस उस. Also, I feel the audience's attention span is reduced drastically. Absolutely. You know, earlier we used to sit with songs and we still be engrossed. I don't think they have the time now. क्योंकि पहले or the patience. पहले सिर्फ चित्रहार में और इधर उधर ही देखते थे ना गाने. मतलब कोई एक अभी तो आप YouTube में देख लेते हो कितना बार देखते हो. You're like, this film has had so many songs. Yeah, the film demanded it. It went with the flow of the story. So yes. So same thing, I mean, it has to be engaging and entertaining. We made Darlings not knowing whether it's going to be OTT or theatre. And we made the film, and then it was a decision that Netflix happened and pandemic happened, and we said, okay, let's release it on Netflix. But while making the film,
we were not thinking about theatre or OTT. The songs were driving the story. It was made staying true to the story, and that's what we did. A lot of people said theatre में आनी चाहिए थी after watching the screenings that we had. आपने भी बोला था. He's one of the first ones to tell me that. But I think because if it's engaging and it's entertaining, that's all you can do as a filmmaker. You can't think of commerce while telling a story. But I think this is also something we are learning new, na? I mean, पहले 2019 में तो we were like कि songs होने चाहिए for most of the films. I think it's your conviction as a filmmaker, yeah. If you feel like the story needs the song, if you feel like you need a song, even if you need a song and dance wala song, if you need it and you will do it with all your might, it works in the film. बाला के first half में एक भी गाना नहीं था. एक गाना नहीं था. Correct. Actually, there are so many films which we don't realize. Even Tigers in the Air doesn't have a song after the first song which comes, and it's 2.5 hours long film. It's narrative eventually. Yeah, it's the narrative. Yeah. But Anisa, this question specifically for you, you have been over here for 25 years, and the style of writing has changed a lot. Like मुझे याद है 90s में and 2000s में there are so many films where you had ideas. Actors used to say yes based on the idea, and then you used to write the script. And आज के time में it has changed completely. आपको कौन सा पैटर्न ज़्यादा पसंद है कि जब आइडियाज ओके हो जाते हैं ना फिल्म बनती थी क्या अभी जब भी आपको बाउंड स्क्रिप्ट के बिना कुछ शुरू ही नहीं होता है? नहीं बाउंड स्क्रिप्ट अबे सेट पे भी लिखे होंगे ना सीन से सुबह. काफ़ी फिल्म बाउंड स्क्रिप्ट मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए कि क्या है कि एवरीबडी नो उसके भी क्या कर रहे हैं. एंड वो जो टेंशन है 11th आवर की, जैसे फॉर एग्जांपल अभी नो एंट्री का जो क्लाइमैक्स है वो लिखा हुआ नहीं था सेट तक जाने तक. ओह हाँ, तो वो मैं सेट पे जाने के बाद लिख रहा था. फिर अपना वेलकम में जो घोड़े वाला सीन है नाना का वो मैंने सेट पे लिखा उर्दू के अंदर. फिर एक लड़के को मैंने दिया कि भाई वो करो, उसमें डायरेक्टर का रोल था इसका विजय राज. उसने बोला मेरे हाथ में कुछ चाहिए, तो वो उर्दू वाला सीन ले लिया और उसने शॉट के अंदर गुस्से में वो फाड़ दिया. तो सारे असिस्टेंट जो है वो ढूंढ रहे हैं. अच्छा, एक ही सीन लिखा हुआ था. नहीं एक कॉपी मैंने ऐसे लिखा था, वो सब ढूंढ रहे हैं, उसको चिपका रहे हैं. नो ये तुम बोलो तो दैट वाज उसके अंदर कभी कभी बहुत कमाल भी होता है लेकिन प्रेशर बहुत होता है. तो मैंने मोस्टली जो फिल्में बिगिनिंग में ली है वो सारी फिल्में जो है, मुझे लगता है ह्यूमर में ही आप कर सकते हो. जब कॉमेडी सीन्स होते हैं ना कि आप मूड पता है, चल तू ये बोल दे. मैंने इम्प्रोवाइज दीवानगी में भी किया था. दीवानगी का जो इंटरवल का सीन है, जो मेजर सीन जहाँ अजय देवगन फ्लिप होता है, वो सीन जो है वो मैंने सेट पे लिखा. क्या बात. तो होता है वो, मैं बिकॉज आई एम राइटर, चलो ठीक है. और उस टाइम पे वो चलता था, होता था. बट उसके बाद भी मुझे लगता है कि पर्सनली अगर आप एक स्क्रिप्ट के साथ जा रहे हैं तो उसमें फिर आपको जो सेट पे समझ में आता है वो 11th आवर पे जो आप करते हो इम्प्रोवाइज. You can still improvise. जैसे भी वो सीन में अपना मैंने उसका लिखा था अपना नो एंट्री में उसका तकिया कलाम बी पॉजिटिव. तो अभी बी पॉजिटिव चल रहा है और प्री क्लाइम एंड में जाकर मैंने ऐसी सेट पे मैं बोला अरे तुम ये पूछो यार बी पॉजिटिव क्या है, और वो बोलता है कि ब्लड ग्रुप है मेरा. तो वो कभी लिखा नहीं था. तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेट के ऊपर जब आप अलग इन्वॉल्वमेंट आपकी होती है तो करते हैं. एंड मुझे लगता है वो फन भी है. लेकिन अभी जो जिस तरह मैं कर रहा हूँ विद बाइंड स्क्रिप्ट, तो उसमें भी है कि आपको रात को नींद आ सकती है. क्योंकि मैंने आज तक जितनी भी फिल्में बनाई है मेरे सारे लोगों से आप मालूम कर सकते हैं मैं 1 घंटे से ज़्यादा कभी शूटिंग पर सोया ही नहीं. अगर वो 40 दिन की शूटिंग है मेरी सिंग स्किंग की तो 1 आवर मैक्सिमम. फिर वो बाकायदा पूरा दिन में शूटिंग, फिर वो रात को लिखना, फिर सुबह शूटिंग पे जाना. टाइम वो 1 घंटा भी नहीं मिला, चलो पहुंच गए, ऐसा भी किया. तो वो है टेंशन वाला काम. And Raj, for you? Interesting. See, it's, I mean, firstly, what sir is saying कि जैसा काम करते थे, जैसा चलता था, I don't think I am capable or very few of us are actually capable of doing what he's done. मतलब it's something to look forward to. हमें नहीं आएगी 1 घंटा सोएंगे जब स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं है और शूट पे जाने वाले. मतलब वो जब तक ड्राफ्ट नहीं आता, so hats off. मतलब I don't think anyone of us in our generation pull it will off. work like that. I mean, even if we try, I think we'll just fall. Absolutely. So that's a special talent. I don't think any of us possess it. And as far as the commercial aspect is concerned, like these guys were saying, I don't think you can force a commercial element into a film. But yes, there are ways you can treat a scene, and that I think to an extent comes from your own sensibility about cinema as well. I think how I can, these guys can make a film, maybe like Qala is something I cannot even, like I saw it recently, and I don't think I can make a film. It's just so beautiful, so poetic. Every frame is just, so it's, I think everyone has a different sensibility of how they want to tell a story. How Amar said Stree or how Abhishek's done Drishyam.
it's just, I think everyone has their own sensibility, and how I would make a treater film might be totally different from how any of these guys would be. So I think it's a slightly individual approach as well. But as far as you're not pushing commercial aspects into it forcefully, I mean, it's a matter of how you treat it. Yeah. Sure. You know, since you mentioned Qala, I have a question on music. But before that, Anisa, I want to ask you, you made such big super hits. आप डिजिटल के लिए कभी मूवी बनाएंगे? Why not यार, डिजिटली फ्यूचर एंड बहुत अच्छा कंटेंट आ रहा है, बहुत अच्छा मैंने देखा सारा, मतलब मुझे लगता है यार बिल्कुल क्यों नहीं, बस यही है कि उसको बनाने का अपना मजा है और प्रोसेस अलग है। हाँ, प्रोसेस अलग है एंड अच्छी उसमें एक बहुत अच्छी और बात है कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो फिल्म बनाने के लिए सोचना है कि यार ये शायद उसमें उतना, हाँ चलो ये बनाते, ये हमारे दिल को बहुत अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर दिल के साथ दिमाग को भी अच्छा लगना चाहिए, वो उतना फ़र्क है। तो मुझे लगता है कि यार डिजिटल जो है वो कमाल प्लेटफॉर्म है और वो करना चाहिए बिल्कुल, और मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। पर सर अगर बनाएंगे उसके लिए प्लेटफॉर्म के लिए, तो आपका अप्रोच कुछ अलग होगा या यू स्टिल अप्रोच इट एग्जैक्टली द सेम? नो बिकॉज क्या है, मुझे पता है कि भाई अपना बहुत बड़ी स्क्रीन पे नहीं दिखाएंगे, हाँ, तो मैं थोड़ा नया भी ट्रीट कर सकता हूँ कि यार चलो एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, जो एक्सपेरिमेंट हम लोग हमारी फिल्म में बहुत लिमिटेड के नहीं है, चलो यहाँ का थोड़ा कर लेते हैं लेकिन ये ऐसे ही रखना है, ये कर लेते, उसमें थोड़ी लिबर्टी मिलती है। मुझे लगता है कि अब बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अगर मैं ऐसी कोई फिल्म बनाऊं, इसलिए कि जो आज तक मैंने नहीं किया वैसे मैं कुछ कर सकता हूं। You should. Yeah, I'll make inshallah. We all can be. Yeah. We all can be. See Anisa's film on it. Anvita, one of the most important elements of Qala is its music, which is created by the fantastic Amit Trivedi. What a music! All songs are golden in its own self. But do you think in today's time, for some reason, and I feel as a cinema lover, the importance of music is being underplayed by filmmakers? It used to be one of the ways to draw the audience to the cinema at one point. But now I don't think people take music so seriously. Is that something you've noticed? No, I don't think it's that they don't take music seriously. I would think that they actually take music very seriously. Yeah. So they are not doing कि audience को draw in करने के लिए या cut to because होना चाहिए इसलिए डाल रहे हैं. Now more and more I think storytellers are putting songs as part of the storytelling. That there is a, like he said, एक ज़रूरत है वहाँ गाने की. या तो वो गाना आपको किसी के इमोशन के बारे में बता रहा है या इट्स मूविंग द स्टोरी फॉरवर्ड. आई थिंक दैट्स हाउ मोर एंड मोर फिल्म मेकर्स आर यूजिंग म्यूजिक राइट नाउ. इट्स नॉट लाइक we've all grown up on music. It's one of the unique things about our films and I think we all love it. हम लोग सब, भाई मेरी तो रोजी रोटी है, ऐसा मत करो. बिल्कुल. बिल्कुल. But you know what I meant to ask is, some people also use it as a filler sometimes. Some people also use it to promote also sometimes. So what's wrong with that? What's wrong with that? There's nothing मुझे wrong. लगता है पर्सनली कि जो Whatever reflects the film best, I guess. Whatever helps the film or your story, you do. देखिए अनगिनत फिल्में Yeah, the हैं audience demand eventually. जिसको हम आज जानते भी हैं तो बिकॉज ऑफ सम सॉन्ग, अरे वो गाना था, वो गाना था. Yeah. अभी जैसे फॉर स्लमडॉग मिलियनेयर मैंने बहुत बार देखी, 10-12 बार, मुझे बहुत अच्छी लगी पिक्चर. उसमें बहुत अच्छी पिक्चर में जो लास्ट में जो गाना है दन 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 जय हो, वो मेरे को इतना अच्छा लगा. Yeah. मुझे लगता है अगर वो गाना नहीं होता तो शायद मैंने जो 10-12 बार देखी है वो शायद 7-8 बार देखता. या Abhishek, this question is for you. You know, in one of our interviews, Nagarjun sir said that remakes as a concept will slowly and steadily stop because of the cross-cultural exchange that is happening right now. And even before the release of Drishyam 2, like we spoke, there were so many theories that remakes nahi chal rahe, but the film has defied all odds. And right now, if we see social media, there is a conversation how Drishyam 3 के लिए part 3 के लिए Malayalam and Hindi should be shot simultaneously. How do you view this aspect, the conversation that's happening, जहाँ पे लोग बोल रहे हैं आप simultaneously आप shoot करो या जो भी है. So, with Drishyam, I think there's a little benefit to it also. Audience have seen Drishyam 1. Yeah. They relate to Vijay's story. Yeah. So they want to go to the journey with that story as well, that face, that family. I think वो एक बहुत बड़ा benefit भी है, I think, with the franchise. But I think remake, when you talk about remake, there's a way you need to rewrite the film for a certain set of audience. Yeah. It's been made for certain audience. I think इसको लिखना बहुत important है वापस दोबारा एक अलग नजरिए से. वो टाइम स्पेंड किया हमने इस पिक्चर में, तभी वो 1.5 साल का गैप लगा है जो OTT हम इतने 1.5-2 साल बाद आ रहे थे इससे. So I think that time is very important to give to the screenplay again, because Malayalam audience is a different audience, Hindi pan India audience is different, you know, Gujarati audience, Maharashtrian audience are very different
taste of watching cinema. So I think that rewriting is important. Otherwise, yeah, remake working, not working is not a question. How you present, how you mount it, how you pitch it to the audience is very important. I mean, rewriting is important. It's not कि formula चल गया तो ये चलने वाला है यहाँ पे. We have seen so many remake not working also. In same time right now, I mean, people saying pandemic है, people are moving out of home to watch. ऐसा कुछ नहीं है. I think there are films working. Kantara has been working. एक साउथ की छोटी फिल्म आई, छोटे नंबर स्टार्ट हुई, कहाँ चलेगी? Give good content, it will work eventually. Drishyam has worked. Kantara, Bhool Bhulaiyaa, Jug, everything is working. So I think just need to work on everything. And Raj, you know, even you are making driving license. What has your approach been to that film as Selfie? Exactly what Abhishek was saying right now. I totally concur is that you have to adapt it for a certain audience. Like I said, the Malayalam audience is different. So I'll give you an example. There are scenes in the film that when we were rewriting, I think Malayalam people don't, like the audience doesn't appreciate too much drama as such. And we love it here. So I was trying to adapt it to that. So there's a scene where the two protagonists come face to face. So the way it happens in the original film was very, and I was talking about this with Prithvi Raj, who's the producer of the original Malayalam film, that it's done very like, they come and it just like goes away. And then I was watching them like, this is the main conflict. And there was no drama attached to it. So the way I shot it and the way I approach it is, you know, high speed, they look at each other, drama, you know, so I'm saying it's about adapting a scene, you know, so it's if it's a story that you like, you have to adapt it like he rightly said, spend time on writing it and all the other elements of it, and then present it and pitch it in a way that's, you know, attractive to the audience that you're catering to. True. So that's, so I totally agree with what Abhishek just said. And I think remake, when it's a hit in a certain language, it becomes more pressure. कि वहाँ चलिए, इसमें भी चलाना है. You know, there's a little more additional pressure when you take a remake and you want to make it for a certain audience. Especially when there's a first part that's already it's already become big. People, it's a cult film. Drishyam. Last 7 years, people are only talking 2nd October को Drishyam, then me in Pav Bhaji. Some messages. So like यार ये pressure एक अलग level का pressure है picture पे. So just because it has worked in a certain language doesn't mean that it will also work. You need to make it your own for the audience. I mean, it is a task. It's a little tough, but you need to really work on it. Simple. Sure. And you know, Amar, talking about this entire aspect, there's a Bhediya which is right from the heartland of India. How did that thought come in your mind? Because you know, if we see the film, the way it progresses, the character eventually turns into a superhero for the. I think that's what the franchisee would be at. So could you tell us something on this thought of origin story from? When we started writing, Nirain and me, we were thinking of कुछ तो universe है, ऐसा लाना है, वैसा लाना है. वो दीनू ने हमारे दिमाग में डाला था, बट हमने सोचा था कि एक ओरिजिनल फिल्म बनाते हैं और सुपर हीरो से रिलेटेड कुछ बनाते हैं, बट उसका ओरिजिन होना चाहिए, यू नो. और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ओरिजिनल कॉन्सेप्ट होना, क्योंकि जैसा आई वुड लव टू डू रीमेक्स, बट क्या होता है मैं डर जाता हूँ, जैसा तूने बोला ना कि वो प्रेशर होता है, तो दैट प्रेशर पुट मी डाउन कि यार तो बेस्ट बन चुका है, मैं नहीं छेड़ सकता उसको. तो मुझे ये होता है कि आई नीड टू फाइंड ओरिजिनल, जो इंडिया से अंदर से रूटेड कहानी है, उसको उससे कैसे खेले. सो एंड उसमें क्या होता है कि आप रूट लेके आते हो, बट उसमें आपको बाकी एस्पेक्ट भी डालना है. ह्यूमर है, क्योंकि मैं ह्यूमर के साथ ही सोचता हूँ, मैं जितना भी है कॉमेडी एस्पेक्ट्स होना, कुछ भी वियर्ड कुछ होना, कुछ अजीब सा चीज़ें होना, चाहे वो तीनों फिल्म में देखो वैसे ही ट्राई किया, आगे भी कोशिश करूँगा करने की. बट साथ साथ आई ट्राई की कुछ और भी बोले फिल्म. तो जैसे आपने बोला ना कि सुपर हीरो बनेगा वो, बट हम लोग एकदम से सुपर हीरो नहीं बनते. मेरी फिल्म में ये वो आखिरी में जाके बन रहा है, एंड ही इज ट्राइंग कि मुझे नहीं बनना है भेड़िया. आई डोंट वांट कि मुझे पैसा कमाना है यार, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है. ये थोड़ी है कि अब भेड़िया बन जाओ रात में पागल की तरह, सुबह सेट करो, रात में खा लो उनको. तो वो ही डजंट वांट. बट जब नेचर उसको बोलता है कि भाई अब तुझे अंदर से बनना है, जब नेचर ने उसको साथ सपोर्ट किया, फिल्म में 1-2 बार होता है कि नेचर आपके पास आ रहा है, बट वो हटा देता है हाथ, वो अंदर से उसको आया नहीं. तो जब वो अंदर से आया, देन आपका सुपर हीरो बनना चालू हुआ. सुपर हीरो मेरा वैसा वाला नहीं है कि जैसे उसमें एक लाइन है कि शहरों के लिए बहुत है, जंगल के लिए एक सुपर हीरो चाहिए. That I think that was some there's a line in the film कि शहरों के लिए बहुत है, अब जंगल को एक सुपर हीरो चाहिए. नीरन ने सुपर लिखा, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना कि जंगल को बचाने के लिए. अब वही है कि आप ह्यूमर तो कर सकते हो, बट ऐसा कुछ भी साथ में अगर दे दो ना, तो मुझे लगता है कि वो उसका एक मजा है, मुझे मजा आता है वो करने. क्योंकि अपने आप को आप छेड़ते रहते हो, अरे खेलें क्या, करें क्या, कुछ करें क्या. मतलब वो जो होता है ना सर मजा की सेट पे इम्प्रोवाइज तो हम लोग करते ही रहते हैं, लेकिन ये जो सेट पे पहुंचना है, ये अजीब सी चीज. अब टेप रिकॉर्डर में वो गाना बजेगा, ये क्या है. मतलब सडनली आप
वो चल रहा है, दोस्त को ढूंढ रहे हो, ये बज गया, उसने हाउल चालू कर दिया। वो चड्डी, अभी हमने वेयरवुल्फ इतने देखे हैं, तो मुझे कभी कोई लगता है कि उसकी चड्डी कहाँ जाती है, वो तो इलास्टिक होती है ना, वो कैसे फट जाती है। Yeah. सो इट शुड बी देयर। Addressed. हाँ, वो उसके साथ है, एंड उसके फ्रेंड्स उससे पहचान रहे हैं, अरे ये तो वही है मेरा दोस्त की चड्डी, भास्कर की चड्डी। सो यू नो, I just want to say something to you. हाँ. It's very sweet. I've noticed this in all your interviews. You always take your writer's name. yeah, It's such a nice thing that you do. because of without writers it can't be. It is such a nice It is, thing. absolutely. Yeah. Without writers, I'm no one. Because of them, because of my team actually, जो भी praise मुझे मिल रहा है VFX के लिए, मैंने थोड़ी किए हैं VFX. Yeah. मेरी टीम ने किए हैं VFX, you know. Yeah, I think. So I'm taking praises because उन्होंने अच्छा बना दिया. क्या VFX है, मैंने थोड़ी बनाया था. We are nothing You know. without them. Yeah. Absolutely. So, But you know, in one of the interviews you also said recently, and I think Raj would agree, that Varun Dhawan is the most curious guy I have ever met. वो तो मत पूछ. So I want to extend this question to all of you guys here. How involved were your actors during the making of these films? And one suggestion they gave, which you felt has really excelled on the big screen. मैं वरुण को बता, वरुण बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप सोचते हो कि यहाँ पे खत्म होता है एक्टर का, वो उसके 5 लेवल के ऊपर जो शुरू होता है, तो वरुण इतना क्वेश्चंस हर 5 मिनट में, अमर ये वाला सीन कैसे करना है, ये क्या करना है। मैंने सुबह 4 बजे उठा हूँ सेट पे जाने के लिए, एंड मुझे आवाज़ आ रही है वरुण रट रहा है डायलॉग्स, क्योंकि आज हैवी डायलॉग वाला सीन है। सो वो, अब आप बोलोगे उसका क्या देता है वो, कि आप फिल्म, जब एक्टर अपने आप को सरेंडर करता है ना डायरेक्टर के आगे, आई थिंक वो उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। I agree with that. Yeah. Completely. वो Because then- एक चीज नहीं होती है। तो सारे You know. agree करेंगे, मुझे लगता है। No, also Yeah, because absolutely, they're not yeah. playing themselves, they're Yeah. playing the character Yeah. there. What you're And writing, they want to know a lot more about the character Yeah. or how you're thinking, and then they have to give life to it. I think Yeah. that is the best thing that Actually, can happen. जो कैरेक्टर वो निभाना आया है, वो उस टाइम पे थोड़े टाइम का उसका इन्वॉल्वमेंट है, वो सुनता है, समझता है, करता है। बट जो लोग उस फिल्म के साथ और 6, 8, 10 महीने पहले से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कंसीव किया है, जिन्होंने सोचा है, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा तो कोई फील नहीं कर सकता, जानता नहीं है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है अच्छे एक्टर्स और अच्छे स्टार्स वो हैं जो ये जानते हैं कि हमें बहुत कुछ आता है, लेकिन हमसे 2% ज़्यादा जो जानता है वही ये आदमी है। But Jasmeet, when you were working with, say, someone like Alia, who was turning producer for the first time with Darlings, and you had Red Chillies on board, that Shah Rukh sir. Yeah. What were the inputs from their end that, you know, like he asked, that one input which made an impact, or, you know, something that you didn't have in the script, and then that one input added on to it in a certain way? So I narrated the script to Shah sir first, and he's very funny. Okay, and so he heard the script, and he had a very interesting input where he said, हमजा जो है second half में उसको छोड़ना मत. Obviously हमने छोड़ा नहीं था, but because the humor was coming out of him just being there tied up, or you know cracking lines, and the tables have turned. Obviously you've seen the evil Hamza. He said छोड़ना मत. ये अच्छा कुछ इसमें humor आ सकता है. Just keep, and please cast someone who can like do this. So I think that is an important input, because obviously then we added a lot more of Hamza after that. So on a macro level that worked. Alia was an actor on set. Okay. It is the first film as producer, but she, I think, as everyone is saying, I prepped with all the actors separately. Yeah. But the spontaneity that they brought together on set was a lot of fun. That is magic. That is what you wait for. Like especially mother-daughter chemistry. Yeah. They're both very spontaneous. And Shefali, and they're all very, very different process-driven actors. Very, very different processes. All of them have. And as he said, Alia was not playing Alia. She was playing Badru. Yeah. And they were all very nice. Vijay is very different. His method, I think 3, 4 months, 6 months, I think we were just discussing the character. Shefali is very unpredictable. Yeah. She does a different thing in every take. So it is so much fun. Alia surrenders completely. She's very professional. She catches the arc really well. So once she's got it, she's with it. Sure. So Roshan was a delight. He was new for us. So it was fun. And he's very, very talented. So it was learning for me because everybody was different. The challenge was they're all so good normally. So That's how true. to, make them do better, or at least they should feel that they're doing justice to the character also, right? So I was very happy. Yeah. Raj, yes, I want to know how was it on the sets of Jug Jugg Jeeyo? Did you get any suggestions from your actors and how involved they are? So we were talking throughout? about Varun right now. I had Varun and Anil sir. So it was like, so Man. it's no, but in all fairness,
like he said, they were just thinking about the film. All the discussion, every suggestion they had was in favor of film. Sometimes you have to be a little smart and filter out some suggestions, because like sir said कि I feel एक डायरेक्टर और राइटर से ज़्यादा सेट पे उस मटेरियल को उससे बेहतर कोई नहीं जानता. And I think thankfully Anil sir and Varun in this case, or Neetu ma'am and Kiara for that matter, understood that and kind of trusted me with that. But of course there was discussions about scenes and how we can make, but it was only how to make it better. But there was nothing that कुछ वरुण से कभी-कभी आता था जो हमारे नहीं बोला, that I was like, yeah, please do. But that filtering is a very, very important thing. that Sometimes the filtering is suggestions are great, but they don't work for the film. They may work for the scene at that point. Correct. So But you then have to for the filter out. actor That's to your biggest job as a director. Correct. But then for the actor to say कि ठीक है तू सही बोल रहा है, that takes that, you know, that trust in the director के तुझे मालूम है, तू बोल रहा है कि नहीं वर्क कर रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, we won't do this. So that is the you know, pick and choose. वरुण थोड़ा क्यूरियस है, वो हर चीज को दूसरी बार इसको ऐसे भी करें क्या, एंड देन आपका पूरा डिस्कशन हुआ इससे पहले, और उसका एक और टेक रहता है ना कि सब ओके हो गया, you're happy, एक मेरे वाला. तो वो वाला जब वो आता था, हाँ ये सर लेते सर, ओके नहीं मैं अगले सेटअप पे चला जाता था, मैं अपने फर्स्ट को छोड़ देता था, पूरे ले लेके नहीं मैं ले अनीस भाई आपके लिए ये सब टिप्स हैं. नहीं अरे हम कौन होते No, हैं? he is doing something with so. अच्छा वैसे हाँ, like how. Sirs handle legends of कहाँ कब से Everyone. नहीं किया. हम तो अभी we are tasting it. नहीं बट मजा आएगा, मुझे देखना है आप दोनों को. It'll be mad. It'll हाँ, be mad. मजा I है. want to see the making of that film with Varun Dhawan. Anita, for you? See, again, with me, I was working for the second time with Tripti, Yeah. and I prepped with her for 3 months, 3 months. 7 days a week. She was with me even if I was doing art meetings and all. She was always in the room, sitting behind, observing. Music sittings, she was there. So she's going to play a playback singer, no? Yeah. So she prepped with me for her to play such a so that on set हम सांस ले सकें. You know, so we are actually set पे जाके आप execute कर रहे थे. Now if you're prepped enough, then you can play. Then you have breathing room to evolve and change, because she was subatomically कला. Yeah. तो उसको नींद से भी उठा के अगर कला के बारे में कुछ पूछो, वो कैसे रिएक्ट करेगी. अगर कला पे कॉफी, तो ऑल्सो दैट्स द थिंग, तू इज कला, व्हेनेवर आई एम टॉकिंग टू हर, अगर तेरे ऊपर कॉफी गिर जाएगी तो व्हाट वुड यू डू. सो शी वुड हैव एन आंसर. सो वी prepped and we built her character together. बुलबुल के टाइम पे I did that heavy lifting with her, but in Qala it became a given. So when we would sit every day, I would say one thing, she would add another thing, and we would keep building Qala from earliest memory. तो 3 साल की उम्र से till we see her in the film, which is she's 19. तो 16 साल उसके हमने बनाए. Wow. But 3 months, that's a commitment from an actor which is very tough in All my today's actors gave me time, but since hers was the titular role and hers was the most complex role, she gave me 3 months. Fab. But everybody, my DOP also gave me almost 3 months. My production designer gave me 3 months. Everyone gave me 3 months of prep. So they love me. I think we all have to get the best out of actors. Yeah, it's all and different adapt process. to their Like it's a process. different Yeah. methods. It's all different process. Whatever yeah. works for them. No, each actor reacts. It's Yeah, He'd yeah, know yeah. better, but This process- they're all so And different. you have to live with that. You have to Yeah. go on the But same I journey with prep a them. lot with all of them. I just do it differently. This Yeah. was Tripti. Yeah. With Babil, it was different. With Swastika, it was different. Exactly. With Amit Syal, it was Yeah, yeah, different. Exactly. It was a different way of doing the same thing, that they surrender and they become the character कि मैं फिर set पे खेल सकूं. Yeah. But sorry, the 3 months is playing on me still. So, you know, I want to ask you, what if 1.5 महीने बाद समझ में आया कि यार actor is not working out? What do you do? Then ऐसा तो होता नहीं है कि actor like But he if the said. actor's Yeah, capable, actor, yeah. then Director. then you're failing That as means a you're not so able to committed to a communicate, character, yeah, I then think you will be. No, if you have, I think then the director is Not not able to working. convey, yeah. You have to be able to communicate. oh, there's a mismatch They somewhere. are like, वो तरीका अलग होगा उस एक्टर को यहाँ तक लेके आने का. Yeah, yeah. किसी को आपको बैक स्टोरी बतानी होगी, किसी को बैक स्टोरी से कोई लेना देना नहीं. You know, so it's your, Absolutely. आपको एक्टर You have to देख के find you need to Vijay, find कि yeah. मुझे इसको how कैसे, do I Connect with Make जैसे the कभी actor's एक्टर process. कभी Some क्या होता है actors जब don't want एक्टर backstory. Yeah. Yeah. अच्छा. Some Yeah, don't some want. actors don't Yeah. want. Some want to know what they're doing. I Yeah. mean, they want a little bit. But sometimes you go into the But set Vijay और पता was- चलता है he is not working. तो बेस्ट तरीका है कम डायलॉग्स, सिर्फ लुक से खेलो. Yeah. बहुत बार मैंने किया लुक.
Yeah, look दो correct. and you choose him for the look and then you see कि अरे ये तो लाइंस नहीं लाइंस बोलता है तो थोड़ा लुक का लफड़ा हो जाता है Or you change the line. And you play with the find, looks like how we communicate या तो production line है, designer से okay. अलग भाषा दोनों बोलते साथ हैं में। music से अलग। yeah, उसी absolutely. तरह हर एक्टर के साथ अलग होता है Like Ajay And Devgn, actor like blotting paper जैसा होता है yeah, they all change. वो सब पकड़ लेते हैं रात में True. You know, in Hollywood, if we look, the concept of stardom has slowly started fading and it has been completely replaced by franchisee and universes. Do you think Hindi film industry में भी वो same concept आ रहा है? Where you know 90s probably till Hrithik Roshan we say is the last generation of that raw superstardom and अभी वो franchisees and universe are taking over. And you have worked with, I mean, you have worked with Varun, you have worked with Ajay sir, आपने तो Salman sir, Ajay sir, Akshay sir, सबसे सामने, and you have worked with Varun and Akshay sir. So what do you have to say? And you have worked with Alia, who is among the biggest in today's time in the stars. So what do you all have to say about the concept of stardom, which is being taken over by franchises and universes? Taken over, I don't know, but I think Darling is a very content-based film. Yes, it has Alia, so the reach is far more. Yeah. You know, some people may watch because it's Alia, but they will like the film, whether they will like it or not like it, it depends on what the film is. Yeah. So yes, I don't know if it's going to replace here, but I think the kind of films that are working, Drishyam, they're all stories that people are connecting with. So I feel like if a film is good and it connects with you, it works. But wait, Right. so And I think it's always been like that. So okay, so that that is And I think it's a combination, yeah. I think nothing cannot take like stardom cannot take over content cannot take over stardom. Stardom की वजह से फिल्म को initial push मिल जाता है, which the content actually finally reaches audience. Yeah. I think it's a combination of eventually together only. yeah. Drishyam without Ajay sir would have opened on a different Yeah, number. yeah, Yeah. With Ajay sir, it had opened on a very different number. No. It got that big push in the beginning. So I think it's a combination which is important. That initial push is yes. That's what happens. I with- think a great content if backed by a great stardom, why not, yeah? I mean, it will eventually become big and the reach will become massive. And that's what every filmmaker wants. Number of footfall are bigger. A lot of people watch it in the theater. OTT, तो I mean, we don't have the data. We never come to know कि क्या कितने लोगों ने देखा है. एक phone पे वाला है हाँ इतने लोगों ने देखा है number. But we actually don't come to know eventually कि क्या है. And ticket sale is something which really makes you excited कि यार इतने number आए हैं. It's not the money, it's the number of people coming to theater. बट मुझे लगता है कि स्टारडम से फिल्म को नहीं वो कंसिडर करना चाहिए क्योंकि क्या होता है हर फिल्म मेकर को स्टार्स नहीं मिलते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो फिल्म मेकर्स नहीं है यू नो फिल्म एक बहुत ही पर्सनल मीडियम है आदमी अपनी तरीके से फिल्म बनाता है जब मैंने फर्स्ट फिल्म बनाई थी राज थे अपार था अभिषेक बैनर्जी थे श्रद्धा का थे तो मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत बड़े स्टार मिल गए स्टार आपको बनाना पड़ता है अपने कैरेक्टर्स को लेकर आप उनको स्टार बनाओ आपकी टीम स्टार है तो मुझे लगता है वो स्टारडम वाली जो चीज़ है ना वो एक हद तक ठीक है ऑब्वियसली पुश इनिशियल मिलता है बट बहुत सारे फिल्म मेकर हैं जिनको स्टार्स नहीं मिलेंगे बट ऐसा नहीं कि वो फिल्म नहीं बना सकते या वो फिल्म मेकर अच्छे नहीं है तो मुझे लगता है कि ये जो एक टर्म है ये धीरे धीरे पीछे जाएगा और अच्छी अच्छी फिल्म्स में That's exactly the question. एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा हूँ कि वो धीरे धीरे जा रहा है धीरे धीरे हम लोग कहानी सब्जेक्ट न्यूपन नयापन यू नो वो सब चीजें आगे आ रही हैं Is that what has pushed you to the universe aspect? You या सो सी फॉर मी माय कैरेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट मुझे ना अपने कैरेक्टर से बहुत प्यार होता है जब मैं विक्की लिखा था बिट्टू लिखा जना लिखा था तो जब राज डी के ने लिखा था बट हम लोग ने बनाया सब लोग थे तो जब वो लोग आपकी फिल्म में खत्म हो गई तो मेरे लिए कभी खत्म नहीं हुए मुझे वो बार बार याद आते हैं यार वो कैरेक्टर अच्छा था ये था वो था तो आई वांट टू रीलिव देम अगेन यू नो सो मेरे लिए फिल्म स्त्री 2 बनाऊंगा या कोई भी चीज भेड़िया 2 या जो भी कुछ बनाऊंगा तो मैं वो कैरेक्टर से एक्साइट ज्यादा होऊंगा कि यार मेरा कैरेक्टर पूरा टाइम नहीं दे पाया उस फिल्म को उसमें खत्म हो गया उसको बुलाना है वो अब ये करेगा बड़ा हो गया है यू नो 4 साल पुराना हो गया बड़ा हो गया वो कैसे करेगा मुझे कभी कभी सपना आता है कि मैं अपना कैरेक्टर में सड़क में घूम रहा हूँ मुझे अपना कैरेक्टर दिख रहा है It becomes real for you. हाँ रियल फॉर मी That is दे आर true. वेरी रियल फॉर मी मतलब मैंने कभी वरुण देखा ही नहीं भास्कर समझता था वरुण को समझा दिया कि भाई तेरे अंदर भेड़िया है तू मतलब अंदर है तुम्हारे तुम कैसे करोगे रिएक्ट सो मेरे लिए वो जो कैरेक्टर्स होते हैं ना वो इसलिए जो फ्रेंचाइजी और ये सब जो है ना मैं दीनू ऑब्वियसली मेरे प्रोड्यूसर वैसे सोचते हैं कि यार यूनिवर्स बनाएंगे ये बनाएंगे फॉर मी अगर एज अ फिल्म मेकर अगर पूछो ऑनेस्टी से तो मुझे सिर्फ वो कैरेक्टर को रिलिव करना है कि मेरा अभी जना जो था स्त्री का वो इसमें लेके आया हूँ मैं और वो किसी को समझ में नहीं आया ही इज वेयरिंग द सेम क्लोथ्स कपड़े सेम पहन रहा है पिक्चर में बोल रहा है मुझे दौरे पड़ते थे
आखिर में जाके समझ में आया। हाँ आखिर में पता चला, बट वो कर रहा है सब कुछ। आपको मैं दे रहा हूँ बीच बीच में, मेरे 2 दोस्त हैं, थे, हैं, ऐसा कर रहा है, थे नहीं हैं, उन्होंने मुझे आत्मविश्वास दिलाया कि तू कुछ कर सकता है, तो वो सब चीजें मैं कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ा मजा आता है। अरे अभिषेक ये, और एंड ही इज सेइंग इन अ फिल्म जय जागेश्वरी माता, जो जागेश्वरी माता का मंदिर है चंदेरी में, यू नो, सो वहां से चलते जाना है, चलते जाना। ही व्हेन ही इज वॉकिंग ही इज सेइंग चलते जाना है, चलते जाना है। जैसे स्त्री में जो अपना उसकी लाइंस थी कि पंकज त्रिपाठी बोलते हैं सिर्फ चलते जाना है, तो मुझे वो करने में मजा आता है। तो दैट्स हाउ आई एम मेकिंग यूनिवर्स। कमिंग बैक टू इमेज, जो पूछा था ना कि स्टार्स एंड द वैल्यू ऑफ स्टारडम, दैट इज नॉट गोइंग एनीवेयर। आई मीन इफ वी थिंक दैट द यूनिवर्स एंड द I'm happy and very pleased as a filmmaker, all of us, that the content is being held more important now and people are starting to understand the importance of good script and content material. But that is never going to replace the stardom. Like for example, today, if for Bhediya you didn't have a Varun Dhawan, would you still get the kind of budget and the amount to mount it and create it the way you want? We might actually, अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि my producer is so honest when it comes to everything ना, like स्त्री में कौन था? उस समय कोई नहीं था स्त्री में, एंड वी वांटेड टू मेक दैट स्त्री इन 3 करोड़ 4 करोड़। उस समय उसने 12 बोला, नहीं बना, ऐसा बना। सो उसका जो फेथ होता है ना प्रोड्यूसर का, वो बहुत बड़ा होता है। ऑब्वियसली वरुण हेल्प्स, वरुण बच्चों से कनेक्ट करता है, वरुण वो कनेक्ट करता है, बट मुझे लगता है कि उससे अगर हम रुक जाएंगे ना, क्योंकि देखिए पैसा कमाना है, आप कहीं से कुछ करके आप कर लोगे, आपको इनिशियल पुश का वो होता है, बट अगर सिर्फ हम यही सोचेंगे तो हम आधे समय तो हम वेट ही करते रह जाएंगे, फिल्म कब बनाएंगे। करेक्ट, यू नो। तो मुझे बस वही लगता है कि हाँ, you're right, absolutely, कि भाई sometime you want some particular person कि यार ये करे, लेकिन अगर उसने नहीं फिल्म की है तो that is always second choice and third choice and fourth choice, लेकिन जो fourth choice भी होगी वो हम जब बनाएंगे तो ऐसा लगेगा यही हमारी फर्स्ट चॉइस थी, और कम से कम हमें लगे नहीं लगे, ऑडियंस को यही लगना चाहिए। स्टार्स जो है स्टार्स होते हैं, एंड एक चांस मिले तो यार क्यों नहीं, ताकि और बजट बड़ा मिलता है और सब मिलता है, बड़ी अप्रोच होती है, और लोग जो ऑडियंस है उनका भी है कि अच्छा चलो ये देख लेते हैं पिक्चर, तो वो बहुत फ़र्क तो पड़ता ही है यार। मेरे गांव में अभी मेरे कई लोग हैं, वो मुझे पूछते हैं कि ये कौन है, तो कौन है ये, तो अभी उनको हम अच्छी तरह जानते हैं शहर में कि अच्छा ये इसने ये किया, गाँव वाले जानते ही नहीं कौन है ये। यार तुम ठीक से लोगों के साथ काम क्यों नहीं करते हो अनीस? तो मैंने बोला हाँ, अभी वो बेचारे जो लोग हैं उनको लगता है वी आर बिग स्टार्स एंड एक्टर्स, सब हमको जानते हैं, वो अपने कल्याण के आगे जाओ किसी जानते ही नहीं है, मतलब उनका नाम बताना पड़ता है 4 बार, नाम के तो बताना पड़ता है उसने ये फिल्म की है, वो फिल्म की, तो स्टार होता है, और उनकी पिक्चरें लोग थोड़ा ज़्यादा देखना चाहते हैं, बजट ज़रा और मिल सकता है, वरना पिक्चर तो हम जो हैं वो सबके साथ ही इसी के साथ बनाएं, लेकिन अगर स्टार के साथ बना रहे तो we get better more budget and more footfall. Even like for example Panchnama, when we started the film, we wanted to make it with popular names, but eventually when we actually get into the field and start approaching, it became a little difficult. वो गया हमारा 5 महीना 4 महीना approach. Then we said me and Lala यार बनानी तो है ही है, so अभी ये स्क्रिप्ट को नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे फिर? Then he said Dad इतना नहीं 3-4 करोड़ बजट दे दो मैं बनाता हूँ। Then we started casting for the film and eventually we got the star cast we wanted. We got these people who were brilliant. क्या बना है? नहीं so well for the film. But again it's a cult film, but problem एक है वही the theatrical release again was restricted. And it became cult on OTT, satellite. Eventually people saw it because of word of mouth. ये इसमें थोड़ा नाम ऐड होता है theatrical and it becomes a big. So it's little push we get. Content will never fail because stardom is not there in the film. But it will become eventually. If you don't have content, then it's beyond everything. Eventually. मैंने बहुत बड़े एक्टर्स और स्टार्स को देखा है कि यार बहुत बोर करे पिक्चर में, क्यों? Because वो कंटेंट नहीं है। It is simple. I think that's कंटेंट से बड़ा, और अगर कंटेंट बड़ा नहीं होता तो मैंने बड़े एक्टर्स जो है बहुत बड़े स्टार, वो सबसे पहले पूछता है अच्छा स्टोरी क्या बताओ, तो अगर वो सब कुछ होता तो स्टोरी कोई पूछता ही नहीं ना। तो स्टोरी का आज जितनी भी फिल्में शुरू होती है उसका पहला स्टार्ट ही होता है कि अच्छा स्टोरी क्या है, तो वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड वैसे भी एक बहुत बड़े डायरेक्टर उन्होंने कहा है कि इफ यू वांट टू मेक अ गुड फिल्म देन यू रिक्वायर ओनली 3 थिंग्स, गुड स्क्रिप्ट एंड गुड, बाकी सारी चीजें जरूरी है, लेकिन उस एक चीज के बिना ये बाकी सारी चीजें जो है वो जरूरी नहीं रहती।
But I think that's the beauty of cinema also, which is why we do these conversations which goes out to public, you know, that they also see another side of ours. Y'all especially, y'all put so much of effort Ever behind the changing, camera. and you have to Correct. adapt and improvise. Correct. That's what you do. And everyone has a different perspective. That's what makes it exciting also. That's right? what If you cinema know is. everything, Yeah, then- absolutely. Last question I want to ask you guys. If there is one film that you can suggest to all the aspiring filmmakers who should watch that film if they want to become a director or a producer, what would that film be and why? I would tell every aspiring filmmaker to read and watch less. You told me this last time also. You read more and write less. So you imagine Yeah. more. Instead of otherwise instinctively you Lovely. just mimicking and recreating without even realizing. Read. कहानी कैसे काम करती है वो सीखो by reading. Absolutely. I wish that applies to a lot of actors also, no? So you don't have to narrate it to them. You know, they can read it and imagine it. Now most of them. I think you Now have a to lot of do them are, both. yeah. You have to do both. I Yeah. mean, you love cinema so much. Yeah, you so have- yeah, eventually I you mean, want of course to. I read a lot, but yeah, you have to read and Yeah, write yeah. and watch. The only thing I can नहीं, read is there's so script. many people who will Oh, give yeah? watch I का can't read books. suggestion. मैं I एक read अपना books all read the का. I can't read books. I don't know why. No, but that's lovely. But I agree You're with right. you. At She's least so your right. imagination keeps working. Yeah, yeah. You don't get influenced. Since we are at it, you would like to suggest a book that people who love cinema would like to read? No, ऐसा कुछ नहीं होता. Whichever genre they like to read, whatever they find it easy, and if they are not readers, they've never read before, then pick up short stories. It's easier to consume. यार फिल्म का जो है ना मुझे तो सोचना ही नहीं पड़ता है कि कौन ऐसे हज़ारों फिल्में हैं जो देखनी चाहिए और मुझे लगता है कि ऐसी लाखों फिल्में हैं जो लोगों को देखनी ही चाहिए कि यार कैसा होता है। बट एक फिल्म जो मेरे दिल के बहुत नज़दीक है, आज उसको बरसों हो गए, मैंने कुछ 300-350 बार देखी होगी, आई डोंट रिमेंबर कितनी बार, उसका नाम है मुग़ल-ए-आज़म। एंड वो जब भी फिल्म आती है मुझसे 3-4 दिन तो काम होता नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि यार ये क्या लोग थे, क्या बना गए और कितने अभी भी हम थोड़े किस लेवल पे काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इन एवरी डिपार्टमेंट, वेदर इट इज एक्टिंग, डायरेक्शन, म्यूज़िक, डायलॉग, उसके ऊपर डायलॉग्स मैंने आज तक मतलब तो हर चीज़ में इतनी परफेक्ट पिक्चर है वो कि वो जब आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि आपको 4 चीज़ें एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर, एज ए फिल्म लवर आपको समझ में आएगी और आप अपनी जो भी पिक्चर कर रहे हैं, एक वो है, एक मदर इंडिया, ये 2 फिल्में मुझे लगता है ये फिल्मों के ऊपर एक थीसिस है, इसको जो है वो मुझे पर्सनली जो 2 फिल्में बहुत पसंद है। Amazing. एंड हमारी राज साहब की सारी फिल्में, बाकी बिमल रॉय सारे, So many are there, बट ये exactly. 2 फिल्में जो है I love Yeah. Mughal-E-Azam. Yeah. Every one of us. That's मेरा of course. जिंदगी में मतलब फाइट जो हुई थी एक मरतबा, पहली मरतबा किसी एक मेरे उनको मुग़ल-ए-आज़म पसंद नहीं आई, तो मैंने उन्हें बहुत मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। एक डायरेक्टर था हमारे, उनके लिए मैं लिख रहा था और वो तो मेरा आपने लास्ट लिखना डे, बंद कर दिया? नहीं मैंने पीछे छोड़ दी। Oh, seriously? हाँ, मैंने बोला मैं ये आदमी की फिल्म नहीं लिख सकता। एंड रिश्ते टूट रहे हैं फिल्मों की वजह से। लिटिल वॉलेंट दोस्तों, तो मैंने उनको बाकायदा, क्योंकि मैं मेरी बुराई सुन सकता हूँ और मैं मुग़ल-ए-आज़म एंड किया से That time technically it was a very beautiful film. This was Technically, very it short. was See, everything. To क्या achieve it at कमाल that किया time. था उस टाइम पे। सुपर Yeah, it's a super. So we cannot beat that. But Mughal-E-Azam is Some film Mughal-E-Azam. which might have had an impact on you. So besides, many. Gone with the Wind. Yeah. If you want to talk about great films, it's a yeah. great film Great. for me. Yeah. Definitely. And lot of yeah, lot of films. Sure. So That's India, I a- mean, India's made such Rishikesh Mukherjee, Yeah. Oh, all his yeah, films. all his films. Chupke Bandini. Chupke, Chupke Chupke. Abhiman, Bimal Roy. Bimal Roy. My Roy. God. Abhishek, for you? I'm a big fan of Shekhar Kapoor, sir. Shekhar Kapoor, yeah. I love his Miss Bandit India. Queen. Bandit Queen actually pushed me Bandit. too much to get in this craft of filmmaking. Then obviously Master and Mr. India made it look how commercial film can also be made. And yeah, I'm a Fincher fan, big Fincher fan, so I love David Fincher films. So these two makers, I think I really follow them too much. Like the style and the way they tell stories. I think I love their storytelling. Lovely. तो कुछ फिल्म्स हैं जिनकी वजह से मैं फिल्म मेकर बना हूँ, लेकिन वो फिल्म मेकर अभी अच्छी फिल्में नहीं बना रहे हैं, तो मैं पागल हूँ रंगीला के लिए। मतलब रंगीला मैं कितनी बार भी देख सकता हूँ। रंगीला में मुझे सब कुछ दिखता है, रोमांस दिखता है, इमोशंस दिखते हैं, फन दिखता है, वो शहर दिखता है बॉम्बे, जिसकी वजह से जो मुझे अट्रैक्ट करता था। रंगीला मुझे बहुत पसंद है। रंगीला जितनी बार आती है मैं
Great आमिर songs कोई too. या आई डोंट नो Great व्हाई actor. जब The भी वो emotion- आती है Yeah, It's beautiful. amazing film. या I think all Ramu film at that All time. Ramu I think at film, that time yeah, they yeah, were एक- like one maker who were like killing अब तक 56 Yeah. you know Company. Oh my god, they were beautiful. मतलब मैं अपनी ये वाली बताऊं जिसकी वजह से मैं ऐसा हुआ कि यार ऐसी भी फिल्म बनती है Yeah. उससे पहले एक तरीके से फिल्म आती थी एक होता था Yeah. एंड सडनली इसने पूरा ब्रेक कर दिया ना उसमें हीरो है मतलब ना उसमें ऐसा कोई विलेन है Yeah. यू नो इमोशंस पे चल रहा है हमेशा हमको क्या फिल्म देख के क्या लास्ट सीन में एक्शन होगा फाइट होगी वैसी फिल्में देखते आ रहे थे एंड सडनली उसने ब्रेक कर दिया था मेरे लिए मैंने कहा अरे बाप रे बाप ये कैसे लड़का एकदम येलो पहन के आया है नीचे आ जा पंखा घुमा. यू नो Yeah. पंखा घुमा ये कर ऐसी बातें हो रही हैं जैसे हम लोग नॉर्मल बात करते हैं तो मुझे वो बहुत अट्रैक्ट किया यार तो आई थिंक रंगीला You said 2 filmmakers. There's one more. हाँ दूसरे भी यही अब तक 56 या ये सब अच्छा. जो भी है अंदाज अपना अपना एक्चुअली Yeah, yeah, yeah. अंदाज Raj अपना अपना Kumar आई कैन सी Yeah. इट लाइक Anytime. कहीं से भी उठा के ले लो In that time, I think not that old, but yeah, Dod also is. Yeah. Yeah, great yeah, it's writing. fun. Yeah, yeah, Superb. yeah. I think क्या लिखी हुई picture है मेरे वो. पिताजी It's बहुत very बड़े funny. शिकारी क्या हैं लिखा है वो क्या लिखा है तो बड़े उस शिकारी टाइम पे लिख दिया like ये आ जानी चाहिए दौड़ इसमें तो कमाल है वो भी. That is actually conviction. funny, These are all yeah. Yeah, conviction Too based funny that films. is. Absolutely. Yeah. Raj? मैं तो अनीस सर का बहुत बड़ा फैन हूँ. I think I just no, genuinely, I mean, I feel like comedy, in my humble opinion, is probably one of the most difficult genres to tackle because there are very little crutches available that are available for some other genres for me personally. So what he's done, but anyway, I mean that and of course Ram Gopal Verma sir, I'm a huge fan of all his films. And abroad, I'm a huge Inarritu fan. All his films, whether it's Amores Perros or 21 Grams or Babel, his ability to deal with parallel narratives and how they kind of come together subtly in all his films. I think I'm just a huge Inarritu fan. So those are the Lovely. And before we sign off, we are sitting over here experiencing a new form of cinema, that's drive-in cinema after a long time. What do you have to say about the newer format of cinemas that are coming our way, right from the drive-in cinema to IMAX? There's another format called ICE, which I think you got a glimpse of, which is coming up with Avatar. So what do you have to say about the newer forms of cinema which are coming our way in today's time? It's great. It's very special. amazing. Whatever enhances the experience. Exactly. Yeah. I think is और मतलब wonderful. थिएटर में बहुत बुलाने के लिए ज़्यादा थिएटर और का एक्सपीरियंस जो था ना हम लोग को बचपन में जो मजा आता था थिएटर में फिल्म जादू. देखने का, कुछ भी अच्छा लगता था ऑडियो विजुअल मीडियम. सो अभी सब लोग वो देख रहे हैं लेकिन कुछ एक्सपीरियंस है 3D हो गया 4D हो गया आपका चेयर हिल रही है कोई भी नया एक्सपीरियंस Yeah. to enhance It's the whole. something- Yeah. which will bring audience to the theater कि अरे ये पिक्चर वहां जाके ऐसे हिलते हुए देखनी है चश्मा लगा के देखनी है that experience कुछ भी नया टेक्नोलॉजी आ गया I am तो fully game for it. Like when I went for Bhediya screening, there were 3D screenings happening and there was a regular screening also. Yeah. But I think the experience of watching Bhediya in 3D, 3D. is just. Yeah. I don't know if Yeah. you'd agree with me. I You know, I Jishnu totally might be agree. said कि technically थोड़ा सा. No. Because I was पहले मुझे लग रहा था कि शायद 3D में थोड़ा डल दिखेगी ये दिखेगी वो दिखेगी but जब मैंने काम करना शुरू I loved it. It's amazing. यार क्या है जो भी बना है ना थिएटर और बनने चाहिए बिकॉज क्या है हम लोगों के यहाँ एक वही प्रॉब्लम सब क्या है screens. कि आज इंडिया में अगर हम गिने तो कितने थिएटर होंगे 6, 7, 8 हज़ार. Yeah, 7,000. तो आप यही सोचिए अभी चाइना में है लाख 1 लाख. तो आज अगर हम सब लोग हैं हमारी चारों पिक्चर अगर एक दिन आ रही है तो बड़ी टेंशन हो जाती है कि यार कितने Clashes, screen love versus लेंगे, ये clashes. होगा वो होगा. Clash. एंड इतने होने के बाद भी जो एक कलेक्शन है मुझे लगता है कि अगर थिएटर ज्यादा हो रहे हैं ना Yeah. तो मुझे लगता है जो फिल्म नहीं चलेगी वो होगी 200 करोड़. करेक्ट Seriously. Yeah. एग्जैक्टली. तो वो मुझे लगता है एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है एंड वो सबको मिल के And Golden Jubilee वापस आएगी शायद. कुछ theaters में लगी रहेगी फिर भी. बिकॉज क्या है मैं आज Diamond बताऊं Jubilee. अभी जैसे मैं जिस गांव में रहता हूँ उसके आगे लोग फिल्म देखना चाहते हैं एक थिएटर नहीं है. Yeah. तो कैसे आपका वो इतना बड़ा बिजनेस होगा यार. यहाँ मैंने अरुणाचल में शूट किया है हम्म. ईटानगर में ही है तो जीरो में देयर इज नो थिएटर. सैड एक्चुअली You know. सो सैड. तो ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है इट इज फैंटास्टिक और हर वो चीज़ जो फिल्म के एक्सपीरियंस को इस जादू को इस मैजिक को और बढ़ा करके दिखा सकते हैं तो वी ऑल एग्री कि यार होना चाहिए. बट मुझे लगता है कि यार और थिएटर्स जो है ना आने दैट इज चाहिए. वेरी Yeah. वेरी इम्पोर्टेंट. 3D बिकॉज मुझे लग रहा है कि 8D हम लोगों theaters की हो. फिल्में जो हैं वो जो पैसे कमा रही है वो बहुत छोटी मिकदार है आज. अगर एक हम Proper. हाँ बहुत कम लोग देखते हैं ना यार कितने हैं.
जो बहुत बड़ी हिट पिक्चर हो जाएगी उसकी कितने फुटफॉल होंगे यार? 3.5 करोड़ के आसपास। नहीं, that's वो also- पॉपुलेशन एक और reason है। 140 करोड़ लोगों के बीच में Yeah. उतने लोग अगर देख रहे हैं Yeah. तो यार इसके बारे में मुझे हमेशा लगता है कि यार थिएटर्स जो है ना वो बढ़ने वो बड़े ज़्यादा होने चाहिए। बिल्कुल. Correct. And sir, you know, last question, because you know 2022 has been a year of learning for everyone. बहुत सारी चीज़ें सबने डिस्कवर करी है. तो इसके बाद जो आप सब फिल्में बना रहे हैं, उसके क्या प्लान्स है? If we can start from. मेरा अभी यार वो सेल्फी का पोस्ट चल रहा है. I'm in the process of writing another thing. So process is pretty much the same. That you work on content. Like I said, script is king, and that's why you make the films first. So just trying to create as much content as I can. I have selfie coming up now in Feb. And then I'm writing the next one, developing a script which I have a first draft of, but we're still trying to better it and work on it. So that's the plan, yeah. Yeah, so writing, I've written something, I'm writing something new. I love directing, but I love to also write and create. So let's see which one falls in place first. Which is? Exclusive. Soon. Just looking for an exclusive. Abhishek? Right now, yeah, just chilling, collecting Enjoying money, the collecting the money as a success. producer, director. As I deliver कर दिया film को, now as a producer, I'm just taking the money. But I'm gonna take a little time to Not get back spending to the money? Not right now. Writing will take some more time, I think. I'm gonna spend easily more than half a year now to get to point what I want to make eventually now next. Like I said, I've been waiting to make films for very long. 2012 से I've been trying to make Bhool Bhulaiyaa. So what I did for myself while I was writing songs for other people and dialogues for other people, मैं साल की एक पिक्चर अपने लिए लिख लेती थी. So I've 8 made scripts. 2. You should have like 6 to 8 scripts. Yes, so I Really? have 7 more. Oh wow! So I just have हमको to दे दो. write. The producers also done 2 days ago. He said, "No, you decide अब which rewrite one कर you लोगे want." लेकिन. So now I'm going. Every year I wrote one for myself. Very Fab. good, very nice. So, Fab. मतलब first draft है, पर है 7 और. बस बनाइए. अरे बहुत है, हम लोग एक पेज नहीं लिख पा रहे. सातों बना दीजिए फिल्म. और वो तो कुछ आता भी नहीं. सातों Good, फिल्म बना good, yeah. दीजिए. You're a writer. You have that benefit. You can keep writing. Have you decided which one you're going along with? No, it's narrowed down to 2, so that's a good thing. Nice. Yeah. It's down to 2. So like he was saying, वो एक कोई खींचती है आपको. So Yeah. that. And lastly, Amar. Amar's universe. Yours Yes. can make the thing. Amarverse. Amar's is a universe. Amarverse. Since you मेरा know. तो you guys मतलब भेड़िया के लास्ट सीन में दिखाई दिया what I'm going to make. Yeah. Three. So, Yeah. yeah. तो बोल दिया उन्होंने तो. When does it start? So He's it's the a only one breaking who news. कौन सा कैमरा? But no, we want to know script का क्या status है अमर? कहाँ तक पहुँची script? स्क्रिप्ट Ready होगी? स्क्रिप्ट पहले से हाँ रेडी थी. वाह. अभी उसी का एक सीन इसमें डाला है. और फ्लोर पे कब जा रही है? Sorry, I'm getting greedy now. वो बताऊंगा. बट अगली फिल्म है स्त्री 2. It's not called Stree 2, but yeah. Yeah. Next. Perfect. Break No, it. but lovely. This was an amazing conversation, and I can speak on behalf of Himesh also. We were so excited for this conversation, and it is an absolute honor for you all to take out the time for us and spend this hour and a half with us. Really, Yeah, it was thank you. a Thank you very much. Thank you very much. Thank you. सबके साथ मिलने का मौका मिल गया यार, सबसे बातें करने का, जानने का बहुत है. Thank you very much. Thank you. Thank you.